Okay, sir. Before creating the writing truth faithfully clear to the English reader. This is a traditional words or brackets to elucidate and paraphrase the meaning of the sacred text. Moreover, this translation corrects some mistakes that have crept into the former translations. A council of scholars in India and abroad validates the translation rendered in the light of the tradition of the Holy Prophet alayhi salatu wasalam. Particularly on God's mercy when explaining its theme and subjects. God's grace embraces all creation and perfects every single law He gave us. The teachings of a translation that rediscovers the deepness of God's immense sea of mercy. This will rekindle faith to disprove the misrepresentation of God as a merciless existence and convince everyone that God the BJP government in India and also in Karnataka, and the Bombay government is spreading myths and hate about Muslims every day. One day they talk about Muslims are anti-women, they are anti-Hindus, they are primitive, they are violent. This is the kind of messages they are spreading. Ordinary non-Muslim today thinks if any Muslim man they see with a hat, they think he is a fundamentalist. They see a woman in hijab, they think she is a victim. When powerful forces are spreading hate, they are trying to divide us. And let us try to fight them with love. Let us and to receive these copies of the Holy Quran. I have always seen Islam, but sometimes we forget that the Quran also talks about nature. There are, I think, 500 references to nature in the Quran. And this is very important because today humanity is damaging the earth, is wreaking havoc on nature. Many of you are from Kerala. In the next 20 years, so much of tree cutting happening in Kerala. Kerala, which used to be once such a green paradise. Well, I have already spoken a little while ago on the messages of the Quran. The primary message of the Quran is peace. Peace within the community of Islam, peace between all religions. That is very clearly underlined in the Quran. But I think not many people realize that the Holy Prophet also talked about being careful with nature, being careful with water. He said trees should not be cut down because they provide shade and they are important. And today, in the context of climate change, we must take the Holy Prophet's words seriously and protect nature, because if we destroy nature, we will destroy God's creation. And in the process, we will destroy all human beings. In many parts of the world, many parts of India, temperatures are going high, sea levels are rising. As I mentioned, even in a state like Kerala,
the entire coast will go underwater. People will not be able to live there. In Karnataka, for example, North Karnataka, it is already one of the driest regions in India. In another 10-15 years, it will be impossible to live there because of drought conditions, because of the heat. So we should follow the words of the Prophet, take them seriously to protect nature and protect God's creation. ऐसा स्थिति है कि संघ परिवार के लोग इस्लाम के खिलाफ मुस्लिम्स के खिलाफ बहुत ही फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है कि ये लोग बहुत हिंसात्मक है, ये लोग बहुत वायलेंट है, ये लोग औरतों को शोषण करते हैं, ये लोग मॉडर्न नहीं है, ये लोग बहुत बैकवर्ड है, ये लोग बहुत प्रिमिटिव हैं। ऐसा बहुत कुछ गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहा है और ये भी फैलाता है कि इस्लाम और मुस्लिम्स हिंदू के खिलाफ है, इस्लाम का वजह से हिंदू लोग खतरे में हैं, ये सब ऐसा फैला रहा है और हिंदू और मुस्लिम्स के बीच नफ़रत फैला रहा है। और मुझे लगता है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो लोग मुस्लिम्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि जो इस्लाम है या हिंदुज़म है, हर धर्म में मैसेज सेम है, वो है शांति, वो है प्यार। किसी भी धर्म में किसी को नफ़रत करने के लिए नहीं बोलते हैं, वो हम समझना चाहिए। और जब ये लोग हमको तोड़ रहा है नफ़रत से, हम वो लोग के खिलाफ़ लड़ना चाहिए, हम प्यार से लड़ेंगे और हम लोगों को जोड़ेंगे, क्योंकि हम इंडिया को बचाना चाहिए, संविधान को बचाना चाहिए कि इंडिया में सेकुलरिज्म और जो शांति है, सबका यूनिटी है, वो ऐसे ही बने रहे। I translated this Quran because the existing translations are in archaic English. I wanted it in simple, standard English. That's why I started translating it anew. So it's not a revision of the existing translations. It is a fresh translation of the Holy Quran in simple English. And at the same time, I have also written a commentary focusing methodically on the mercy of God. God is so merciful. He is so forgiving, contrary to the general misconception. He forgives every sin. So that's what I want to express through my commentary. He forgives every sin except shirk. Shirk is associating other gods with the only one God. So there is only one God. So even if that sin will be forgiven by God, if a person is asking for forgiveness, so there is no sin at all that God will not forgive. I wanted to emphasize this in this translation and in this commentary. That's the distinctiveness of my translation and the commentary. It's in very simple English. Even an 8th grade student can read it easily and understand it easily. Is it available online? Sorry? No. It is a printed version. Printed. I have not yet gone online. Soon it will. It is available in the known books, Trichur, and you can access it through www.knownbooks, noonbooks.in. You can access it. हर साल हमारे यहाँ बेंगलुरु मलयाली के तरफ से ये इज्तिमा होता है, रमज़ान संगमम बोलता है, रमज़ान मीट हर साल होता है। ये तकरीबन 21वां साल है। इससे पहले भी आपसे इसके बारे में आप आए थे, आपसे बात भी किए थे। तो ये फर्स्ट टाइम जो है ये कुरान का ये लॉन्चिंग ये एक मौका में हमने ये मौका इस्तेमाल किया है। तो कुरान का ये ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन, सिंपल इंग्लिश जैसा आपको बताया था, सिंपल वो एक मौका हमने उठाया है। हमारा तो काम आप तो जानते हैं, मैं हीरा फाउंडेशन ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ। हम 20 साल से यहाँ का सबसे ज़्यादा बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा वेलफेयर एक्टिविटीज़ हमारा ही होता है। तकरीबन 150 बच्चों का हम पूरा फ़ीस देता है, पूरा स्कूल का पूरा फ़ीस देते हैं। किसी कॉलेज का बच्चों को भी देता है, कोई मेडिकल कॉलेज को भी बच्चों को भी दिया है और इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को भी दिया है।
और तकरीबन 150 फैमिलीज़ को हम मंथली राशन देता है, हर महीना 1000 रुपये का राशन देता है। और दूसरा मेडिकल भी हेल्प बहुत करता है। हमारा अब तक का हिस्ट्री ये है, तकरीबन 1.5 लाख लोगों को हमारा फ़ायदा पहुंचा है। अभी ये कुरान इंग्लिश का ट्रांसलेशन, आजकल के बच्चे हैं वो ना उर्दू जानते हैं ना मलयालम जानते हैं, वो आजकल इंग्लिश मीडियम में हर चीज़ पढ़ते हैं। हमारे पास 1000 बच्चा मदरसे में पढ़ते हैं, सबका मीडियम इंग्लिश है। अभी उन लोगों को कोई इस्लाम सीखने के लिए, कुरान सीखने के लिए दूसरा कोई ज़बान से अभी नहीं होता है, इसलिए ये कुरान का ट्रांसलेशन सबसे ज़्यादा उनको काम आता है। 1000 बच्चा हमारे पास पढ़ते हैं, तो ये दूसरे सिंपल होने की वजह से आवाम को भी इसमें काम आता है और नॉन मुस्लिम्स को भी हम इंशाअल्लाह पहुंचाएंगे। ये ऐसे ऐसे उन लोगों को इस्लाम के बारे में जो गलतफहमियां हैं वो दूर होने के लिए ये इंशाअल्लाह ये कुरान का ट्रांसलेशन बहुत काम आएगा।